All right, we are here. We are here with the business end of the tournament. Now the league stage is over, and here we are to cover the business end of the tournament starting today, 8 p.m. IST. We have the first game, South Africa versus Australia, and then in the morning tomorrow, we have a big game, England taking on West Indies, and we are here to discuss that. And of course, all of them now want to win the coveted trophy. Starting now with the first game, Vanil, क्या लगता है मतलब what is going to happen, in the USA and South Africa game now? That's going to happen in Antigua, at the Sir Hmm. Richard Stadium. यूएसए के लिए टफ टेस्ट हो गए अब तक वो जो टीम के सामने खेल रही थी they had a lot of the bowlers had a lot of assistance from the pitch. They were low scoring thrillers, but now they come up against a formidable side like South Africa, who has the likes of Quinton de Kock, Klaasen, Hendrik Markram is keen to be a captain, and South Africa पास ये भी advantage है कि वो यूएसए के साथ खेल रही है. It's not a part of the death wish group जिसको बोलते हैं कि every team that you play is going to be top notch. But USA will obviously be very happy that they've reached here with the kind of talent that they have, with the kind of bowlers that they have, with the kind of batsmen that they have. And don't forget the fact that Aaron Jones is Caribbean, he's from Jamaica. And he's also played with the likes of Russell, Pollard, etc. He's interacted a lot with Darren Sammy also in the past. So that is going to be an added advantage. Of course, he'll have a lot of inputs to give when it comes to wickets in West Indies. Um, so yeah, I think that will favor USA. But if USA do manage to pick up a few early wickets and they get rid of that middle order of Klaasen and Miller, then they're 100% in the game because I think USA has the batting strength that can chase down a good total. Again, it's going to be a low scoring match. I'm assuming it to be in Antigua. So all the best USA. I'm cheering for you. यूएसए की बात करी तूने, अभी स्टुअर्ट लॉ का एक नया इंटरव्यू आया है वेर ही सेड दैट यार जब हमने कनाडा को हराया और फिर पाकिस्तान को हराया ना, दैट जस्ट ब्लू अप, the entire thing, entire base in cricket. मतलब यूएसए को अब सब इधर उधर देखने लग रहे हैं, एंड एवरीवन just now is understanding कि हाँ मतलब क्रिकेट भी एक चीज है जहाँ पे, because USA is doing well, a lot of players from Pakistan, from India, all this origin coming in, and I think that's one of the strengths, because everyone understands how culturally different we are within the team, and I think that's really helping us. And हमने इससे पहले भी, वर्ल्ड कप से पहले भी, एक फुल मेंबर बोर्ड बांग्लादेश को हराया. But the moment we, beat Pakistan, I think that really, sort of aggravated the entire cricketing culture, within, and that should be the start of, the evolution of the cricketing culture. Or that just goes to show, matlab, how important it was. They were in fact expecting themselves, to be, underdogs and underperformers, and in fact getting knocked out even before the Super 8 stage. But now that they are here, द माइंडसेट स्टिल इज द सेम, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ ने बोला है कि भाई अभी भी तुम वैसे ही खेलो, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भी किसी ने हमें एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. वी हैव एक्चुअली एक्सीडेड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस बाय रीचिंग द सुपर एट्स. So it's Hmm. important now that we keep performing the way that we have, because we were very close to beating India. We were very close to, we've beaten Pakistan, we've beaten Canada. Yeah, Of course, who knows that we probably would have even beaten Ireland had the game not been I watched. mean, So, yeah. they have that confidence, and I'm really looking forward to in the USA as a team. But Ali Khan, your favorite, you're expecting Yes. something from him? अली खान ने बहुत सीपीएल खेले, उस बात को मत भूलना. आई थिंक इसने, हाँ, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के लिए भी सबसे ज्यादा सीपीएल खेला है. आई थिंक 2021 में लास्ट मैच था, बट ही नोज हाउ वेस्ट इंडीज विकेट्स ऑपरेट. सो अगेन, अगर हमें ये लग रहा है कि यार यूएसए को वेस्ट इंडीज में पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि उनके पास वेस्ट इंडीज ओरिजिनल प्लेयर्स हैं एंड लॉट ऑफ सीपीएल experience that they're going to carry forward. Plus Stuart Law. Stuart Law has coached around the globe. Okay, so full credit to him, man. Full credit to him. I think the way USA has performed this World Cup, outstanding. So it's going to be a tough battle unless and until someone like an Andrej Nokia comes in and he puts out that express pace of 145, 150 that just completely out which uh, then it's a different story. But apart from that, I think it's going to be a great contest. So you're expecting South Africa to just cruise through? Sure. Not cruise through, but at least win. Yeah, yeah. It's a strong team. I mean, okay, USA is great. You've done really well, but South Africa has been there since a long time. So
Any players to watch out for from either sides? Watch out, Quinton de Kock. He needs to be back in form. Hmm. He is their most reliable batsman at the top order right now. क्योंकि जो सामने Reza Hendricks है, he's also not really shown a lot of form. But Quinton de Kock, Hendrik Nokia, Hmm. Tabrez, Shamshi, ये तीन लोग. Shamshi का spin ना, I don't think USA. I don't know how USA is going to play against spin because we haven't seen them play against spin this World Cup a lot because of the kind of wickets they have. Now there's going to be Shamshi from one end. There's going to be Keshav Maharaj. Hmm. So I think batsmen and spinners. And remember, Quinton de Kock right likes hitting in that cow corner. I know he mid wicket भी उसका strength है, लेकिन वो cow corner भी उसका strength है. And we haven't really seen Harmeet Singh bowl a lot of overs. In fact, India के सामने तो उसने एक ओवर डाला भी नहीं था, एक भी ओवर नहीं डाला. So that is one. Second, of course, Ali Khan, Aaron Jones. मेरे को देखने का है Aaron Jones को कैसा खेलता है वो अपने देश में. And नेत्रवाल का कुछ और and Harmeet Singh because spinner. I'm really looking forward to one guy whose name is Oatmeal Bartman. I think that guy has been very impressive. ठीक है. तो ओटनील बार्टमैन की फैमिली ने बोला है कि जब यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं ना, जैसे इंडिया में 6 AM वाले मैचेस हो रहे हैं, तो वहां पे साउथ अफ्रीका में 1:30 AM. But because he's 31 years old, and at that age, usually people think of leaving cricket. ठीक है, उसको वो चांस मिला. At one point in time in his life, he was about to give up on cricket completely. और उसको वो चांस मिलता है और आज उसकी फैमिली लिटरली उसको बैक करती है at 1:30 AM to 4:30 AM. ओनिल बार्टमैन को पूछता है, भाई तुम लोग सोए भी क्यों नहीं सोए? बिकॉज ही डिफेंडेड 7 of the last over against नेपाल. और द फैमिली वाज देयर टू सपोर्ट हिम, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था यार ये. एंड उसने उसने ये चीज बोली है कि जब भी मैं ऐसी सिचुएशंस में होता हूँ, मैं अपने हमेशा कोचेस और अपने एकेडमी वाले कोचेस से बात करता हूँ, जो कि हाई स्कूल में मेरे को सिखाते थे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैंने ऐसी सिचुएशन में कई बार बॉलिंग डाली है. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू स्टे काम एंड बी कंपोज्ड इन सिचुएशंस लाइक दीज बिफोर. साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ना, जहाँ से वो आता है, वहां पे यूजुअली क्रिकेट का इतना सीन नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोग क्रिकेट खेलते हैं वेस्टर्न केप में या फिर केप टाउन नेपाल में. बट यहाँ पे ये बंदा ऑलमोस्ट ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस. ठीक है. एंड देन आफ्टर हैविंग प्लेड SA T20, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली गेट कंसिडर्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट थ्रू SA T20 फॉर साउथ अफ्रीका. So that Hmm. and the way he's bowled in this tournament, I think he's been a really key performer for South Africa, and I'm really looking forward to more and more of O'Neil Bartman for sure. But yeah, I mean, hopefully we get a good game. South Africa and USA, and USA, as Yeah. you rightly mentioned, yeah, matlab, they've been one associate nation who've really not gotten overawed by the occasion or whom they are playing, or the opposition for that matter. So yeah, I mean, really looking forward to Stuart Law's USA, or maybe I should say Monal Patel's USA, or Saurabh Netravargal's USA. I think it's everyone's USA now. So moving on to the next game, man. This is going to be a cracker. I mean, two teams, both known for their power hitting, both known for a lot of stuff that's happening off the field. Some good, some bad. But West Indies and England, two powerhouses of international cricket taking on each other. ये मैच से ना मुझे एक लाइन याद आती है. तेरे को पता है एक हिंदी में कहावत है कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है. पता है ये बात? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये. इंग्लैंड T20 पैदा किया, लेकिन वेस्ट इंडीज उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है. So West Indies is the formidable international cricket team that has got T20 the limelight. However, the seed of that idea was by England, and the whole idea of making T20 was to have more people watch it. And now they face each other in a T20 match where a two-time champion West Indies versus two-time champion England, है ना? Correct? Yes. But again, see, England and West Indies also have a lot of history on it, and you go back to the 1900s, etc. Because it was the English who was sort of ruling over the islands, and they were the ones who introduced cricket there. And of course, cricket for them was exclusively only for a certain race of people. It's just that slowly, the West Indians started playing it, and West Indies के लिए ना क्रिकेट खेलना एक फॉर्म ऑफ रिबेल था कि अगर तुम लोग खेल सकते हो ना, तो हम लोग भी खेल सकते हैं, नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर.
क्योंकि जब आप क्रिकेट ग्राउंड पे उतरते हो ना सर, तब आप कलर नहीं देखते, तब आप कहाँ से हो ये नहीं देखते, आप बस ये देखते हो कि मैं बॉल से कैसे खेलता हूँ और बैट से कैसे खेलता हूँ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री अटैच्ड टू इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज दैट वी डोंट रियली गिव अटेंशन टू. दूसरा, इंग्लैंड ना यार बहुत खर्चा करके आया है, इन पहले भी बोला, बहुत खर्चा करके आया. इंग्लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर है, तेरे को पता है. वो जॉस बटलर क्यों साइकोलॉजिस्ट को लेके गया है, एंड ये प्रेशर ना मेरे को लगता है ईसीबी ने बनाया है कि भाई प्लीज, हम लोग का रेवेन्यू dwindle हो रहा है, आप लोग को जीतना पड़ेगा, आपको जो हेल्प चाहिए हम सब देंगे, लेकिन आपको जीतना पड़ेगा. तो वो प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर है, चाहे वो कितना भी नेगेट करे उस चीज. जितना भी नेगेट करे पर जीतना तो पड़ेगा। रॉब की के ऊपर काफी प्रेशर है बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड इनफैक्ट इंग्लैंड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, पर वो नहीं हुआ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट से कि नहीं यार, आप लोग जो है एक टाइम पे एक क्रिकेट को सबसे ज्यादा वो चीज दे रहे हो। और यही चीज पता है जो रूट के साथ भी हुई। सो व्हेन मॉर्गन टुक ओवर, ठीक है, he was like one of the best of players. I want this, I want that, I want him, and I want. And Joe Root couldn't really get the players that he actually wanted. और उसके उसको एक टेस्ट साइड देती जो मतलब वो सिर्फ वही चलाता रहा, वही मारता था बेचारा। ठीक है, एंड हेंस आई फील फॉर जो रूट बिकॉज आई थिंक he really captained a very 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 difficult time, when it was COVID also. He was the captain, and Ben Stokes left because he wanted some mental break. एंड अगर आपका वाइस कैप्टन ऐसे छोड़ के चले जाता है तो ऑब्वियसली आप एक लीडरशिप ग्रुप में कहीं ना कहीं वो फील करते हो कि नहीं यार शायद कोई हो सकता था, बट ऑफ कोर्स ही हैड द बैकिंग ऑफ जॉस बटलर एटसेट्रा. But then if someone like Ben Stokes leaves, and Ben Stokes is huge, ठीक है, जैसे अपने लिए विराट कोहली है, जैसे अपने लिए एम एस धोनी है, उन लोगों के लिए बेन स्टोक्स है भाई ऐसा. ठीक है, एंड दैट काइंड ऑफ फिगर देन गोज अवे. एंड तो वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता है. एंड लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग दैट टाइम. जब तक बेन स्टोक, इनफैक्ट आफ्टर इवन बेन स्टोक्स केम इन, ठीक है, कुछ इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ था. बेन स्टोक्स केम इन ड्यूरिंग दी ये अपना एशेज जो इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वापस आया था वो कि नहीं यार अब एशेज के लिए जाना पड़ेगा करके. बट फिर उसके बाद भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ बिकॉज दे गॉट बीटन बाय 4-4-0 वो स्कोर था. डेविड गॉवर ऑस्ट्रेलिया. का मुझे आज तक वो इंटरव्यू याद है डेविड गॉवर का. ठीक है, कि मैं अपसेट हूँ, हाँ ऑफ कोर्स ये विजिबल है, पर मैं क्यों अपसेट हूँ उसने भाई एक उसका प्लीज टू ऑल ऑफ व्यूअर्स आई वुड definitely urge you to go and watch one of the press conferences that was not a press conference but हाँ a post match presentation where David Gower ने जो रूट को लिटरली मतलब इतना हरास किया वो चार बहुत. जीरो हाँ, के बाद. अरे बाप रे. बट ये यार वही सीरीज having है ना said जहाँ that, पे एलिगेशन लगे थे, बियर पी रहे थे वो लोग. नहीं नहीं द नहीं सेम नहीं, एलिगेशन, लाइक नहीं देवर नहीं, लाइक they यार that they क्यों were. हार रहे हो, क्यों हार रहे हो. नाउ इज दिस द टाइम टू थिंक अबाउट चेंज इन पर्सनल. बट आई थिंक जो Hmm. हैंडल इट रियली वेल by saying right now is not the Yeah. time to even think about change in personnel because the emotions are pretty high. If I go in the dressing room right now saying कि भाई तू गलत था, तू गलत था, तू गलत था, तू बाहर, तू बाहर, तू बाहर, नहीं होगा. Yeah. It's very very important that we stick to what we're doing, and at least अपना ethos तो मतलब वो maintain रहे. But I think even with let's say 7 or 8 same set of players, Ben Stokes has been Hmm. able to sort of turn it around. But again, because Ben Stokes has been able to turn it around, and because they wanted to because of this entire Joe Root incident, that they wanted to focus more on Test match cricket, somewhere ODI cricket got left behind. That is what व्हाइट I. बॉल क्रिकेट का इशू है. बट इंग्लैंड का और एक इशू है वर्ल्ड कप में, और ये वेस्ट इंडीज के सामने. वेस्ट इंडीज या कोई भी टीम इस बार दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ उतरा है, मोती एंड रिक हुसैन. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड में सब राइट हैंडर्स है. ठीक है. स्टार्टिंग से लेकर 6-7 नंबर तक राइट हैंडर है, फिर मोइन अली है, और फिर वापस राइट हैंडर है, और फिर एक शायद रीस टॉपली है. So England will have to figure out if they want to play bend bucket or not. Maybe an option as a left-handed bend bucket, maybe, but it's going to be very interesting to see how they handle Akil Hussain because वो उनका अकील हुसैन का वही काम है जो इसका काम था इससे पहले, आपका लेग स्पिनर जो है वो. मोती. नहीं नहीं नहीं, लेग हाँ, आदिल स्पिनर. रशीद. आदिल रशीद. नहीं यार, क्या अरे जो देखते T20 में स्टार्ट करता था, अरे जिसने स्टार्ट किया लेग स्पिन डालना स्टार्टिंग में पावर प्ले में, हैं? जो सैमुअल बद्री. कमेंटेटर है अभी. सैम्यूल. सैमुअल बद्री. करेक्ट करेक्ट सैमुअल. करेक्ट, सैम्यूल बद्री. So this is what they need to do. That is what Akhil. So basically, Akhil Hussein's job is to cut out the first 3 overs for sure. ठीक है.
And if you observe Mukesh Moti की bowling देखना, he is not someone who darts the ball like a Hussain. He is someone who slides the ball. और उसकी एक ना स्टॉक डिलीवरी है. तो तुमने देखा है वाइड का लाइन होता है जहाँ पे एक सिग्नल होता है कि यहाँ से बाहर गया तो वाइड है. वो उस लाइन से बाहर आके एक बॉल डालता है जो एंगल करती है स्टंप्स की तरफ. That is his top ball. And I saw this while I was going through his Instagram and I was seeing his reels. उसने अपनी टॉप 7 या 8 विकेट्स का वो डाला है स्निपेट्स. उसमें मैंने देखा इतना वाइड आके वार्नर डालता है. And Mukesh Moti is someone who's made his debut at 26, which is very late uh, in terms of what modern T20 is going on. So I think England need to have a plan against those two left-arm spinners. Otherwise, they'll be in a lot of trouble. And boss ये Nicholas Puran form में वापस आ गए. So Adil Rashid and Moeen Ali need to be a little careful. बट आई थिंक the वेस्ट इंडीज ने अभी तक स्पिनर्स को अच्छा रोटेट भी किया है एंड द वे वेस्ट इंडीज पिच बिहेव्स का जो 7 to 14 या 15 ओवर्स है ना वो बहुत ज्यादा Yeah. इंपॉर्टेंट होने वाला है व्हेन इट कम्स टू स्पिन एंड दैट इज वेयर यू नो आपका यूजली क्या कहते हैं प्ले आउट होगा बट ऑफ कोर्स दे यूज आकिल हुसैन इन द पावर प्ले और वो एक अच्छी चीज हुई है उन लोगों के लिए बट भाई मोती मोती इज मोती ड्यूरिंग हाँ भाई द वो ऐसा फ्लाइट करेगा. उसने एक विकेट लिया था और बॉल एकदम शार्पली टर्न कराया था 99 किलोमीटर पर आवर. और वो ऐसा उसका एक्शन देखना लेफ्ट हैंड रविचंद्र अश्विन जैसा पीछे से आता है ऐसे. एंड इट्स जैसे वेरी डिफिकल्ट टू रीड हिम फ्रॉम द फिंगर्स. द बॉल हैज अ डिप एंड देन सडनली टर्न्स अवे और कम्स बैक इन. सो मजा आने वाला है कि But भाई I'm इंग्लैंड. sure that we are going to, I mean, get a high scoring game when it comes to St. Lucia, Darren Sammy हाँ Stadium. वो बैटिंग विकेट है. हमने देखा ना बैटिंग विकेट है. अरे सेंट लुइस का से वही बोला ना स्टेडियम का नाम डैरेन सैमी है. एक प्लेयर के नाम पे स्टैंड है जॉनसन चार्ल्स के नाम पे. बट वेस्ट इंडीज को ना ये कंडीशंस बहुत अच्छे से पता होगी. डैरेन सैमी को तो 100% पता होगी यार. उसी का स्टेडियम है. तो इंग्लैंड को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा. तो दिस मैच इज गोइंग टू बी इंग्लैंड with its technology and West Indies with its instincts. It's going to be like that. But any player to watch out for from England? भैया मेरे को पता है क्या लगता है यार इनको रीस्टॉप लीजिएगा मे बी इफ दे वांट टू जस्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन देयर बैटिंग और तूने कहा कि मतलब उनके पास लेफ्ट हैंडर भी नहीं है प्रॉब्ली ट्राई एंड गिव सैम करन अ गो हो इंस्टेड ऑफ सकता है. रीस्टॉपिंग IPL वो भी खेला हुआ है. हाँ इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ये हो रीस्टॉपिंग सकता है. हाँ. And Sam Curran IPL में भी अच्छा. He was a captain for Punjab. He's shown decent performances with the ball on flat wickets. 100%. If you want a left-hander, then Sam Curran is someone. He's got variations Okay. also. He's got the slow cutters. Yeah. He can bowl you the Yeah. yorker. He can swing the ball during the power play. So yeah, he's a complete package. But जगह बन नहीं रही थी अभी तक. But if you are able to play Reece Topley by sitting or by keeping Jordan out, maybe I think कि अगर आपको अपनी थोड़ी सी बैटिंग स्ट्रेंथन करनी है, maybe try and give Sam Curran an opportunity. क्योंकि अगर आपको लेफ्ट हैंडर भी चाहिए तो आपको लेफ्ट हैंडर भी मिल जाएगा. You can Yeah. utilize him as a floater. Let's say, for example, if you want to, sort of use him in the power play or use him, let's say, in the middle overs to just knock a few around and then rotate the strike, that can happen. So that is what I was thinking. Ki, matlab, maybe if they can give Sam Curran a go, and he's been, like you mentioned, yeah, matlab, he's been a decent performer. And when you captain a side, which is done Mm. pretty well, even when it has been on the losing side, chalo, theek hai, but it's done pretty well. It's shown a lot of character, and I think that just kind of, uh, increases the confidence of you, matlab, as a player and as a captain as well. Yeah. So Yeah. yeah, hopefully we get to see more of him, and hopefully we get to see a cracker. So final predictions, Donald, क्या लगता है? South Africa and West Indies. South Africa and West Indies. Hopefully, we are able to see an upset. I won't say an upset anymore, but yeah, अपसेट नहीं है भाई. अब तो बस it's now हार anyone's है. game now. It's anyone's game now. So hopefully we are able to see probably different results. And yeah, but yeah, mostly it's going to be South Africa and it's going to be West Indies for sure. As Donald mentioned, we'll see you then tomorrow after the games, after the first two games of the Super 8 stage, and of course we've got the big one tomorrow, and we'll talk about that tomorrow in the morning. Till then, of course, keep following us on all platforms and stay safe.